अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आहियां जो मेज़बान नईम सुगरो। प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि कंदासीं जेका सिंध में मंशियात जी वधंदड़ नासूर आहे उन ते जेको असांजी गवर्नमेंट आहे उहा घणे टाइम खां पोइ असांखे सीरियस नज़र अचे थी। फरियाल टालपुर जी सदारत हेठि सिंध असेंबली जी घरू मामलनि बाबति कमेटी जो इजलास थियो आहे, जंहिंमें चयो पियो वञे त 1.5 कलाक ताईं अनमोल उर्फ पिंकी जेका ड्रग डीलर आहे, कोकेन क्वीन जे नाले सां बि जेको आहे उनखे सॾियो पियो वञे, उन ते ॻाल्हि ॿोल थी। उन में ब्रीफिंग्स ॾिनियूं वियूं ऐं ब्रीफिंग्स में इहो ॿुधायो वियो त जेका अनमोल उर्फ पिंकी आहे उन जा नाइजेरिया में अच वञ हूंदी हुई ऐं जॾहिं इजलास दौरान सुवाल कयो वियो त छा पिंकी खे लाहौर मां गिरफ़्तार कयो वियो त उन वक़्तु सिंध पुलिस ख़ामोशी अख़्तियार कई ऐं इन खां सवाइ इजलास दौरान मुख़ालिफ़ धुर तरफ़ां जेके पिंकी केस में अहम शख़्सियतूं आहिनि उन्हनि जा नाला पब्लिक करण जो बि मुतालबो कयो, पर सिंध हुकूमत उन खां जेको आहे त मना करे छॾियो। त हिन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। इजलास खां पोइ जेको घरू वज़ीर आहे ज़िया हसन लंजार साहब उन ब्रीफिंग ॾिनी आहे, उन छा चयो आहे अचो त अव्हांखे ॾेखारियूं। आज जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी उसमें जो मोस्टली नारकोटिक्स पर जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग थी और उसके अलावा यहाँ पर जो हमारे जो पुलिस नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है वो ब्रीफिंग थी। और इसमें जो आपने कहा कि पिंकी के हवाले से आपने वैसे उसको सेलिब्रिटी बना दिया है मीडिया ने, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उसी को डिस्कस करना है। लेकिन देखें, आप लोगों ने उसको इतनी हाइप दी कि यकीनन हमसे पार्लियामेंटेरियंस पूछ रहे थे और उस केस की प्रोग्रेस भी बताइए कि उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। उसके साथ साथ मैं ये बात आपसे कहूँगा कि हम नारकोटिक्स के हवाले से सिंध गवर्नमेंट का एक प्रॉपर स्टांस है और इसमें आगे आपने सुना भी होगा कि हम नारकोटिक्स कोर्ट्स भी बना रहे हैं और जो नॉर्मल कोर्ट्स थी, जो सेशन कोर्ट्स थी, उसमें नारकोटिक्स के केस चलते थे लेकिन उसमें कन्विक्शन रेट 3% था, जो कि ANF के 87% से जो ANF की कोर्ट्स बनी हुई हैं उससे बहुत कम है। तो उसके लिए हम 14 कोर्ट्स बना रहे हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो सिंध वाला है उसके हवाले से यकीनन कुछ वहाँ पर जो एक इशू ये है कि वहाँ पर उनकी फ़ोर्स बहुत कम है। तो लेकिन हमने उसमें सेक्शन 28 में अमेंडमेंट डाल दिए कि पुलिस को भी सेम पावर्स दे दिए हैं, तो पुलिस भी साइमल्टेनियसली मिलकर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से काम। और तालीमी इदारों के अलावा हवाले से ये बता दें कि एक हम हाई पावर कमेटी बना रहे हैं जिसमें मिनिस्टर्स हमारे साथ होंगे और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ये जो पेरेंट्स एसोसिएशन है ख़ास करके प्राइवेट स्कूल्स की, उनको कायल करें कि वो इसकी टेस्ट का कोई तरीका करें। मेरा अपना इंटरेस्ट ये था कि इसमें हम एक बजट जो हमारा ड्रोन सिस्टम है उस पर हम रखें। एक हम यहाँ पर एक डिपार्टमेंट में ही एक एरिया बनाएं, ख़ास करके बड़े शहरों में जो इश्यूज़ हो रहे होते हैं कि कोई हड़तालें हो रही होती हैं तो उनको हम ड्रोन के थ्रू ही चेक करें। हम चाह रहे हैं कि यही ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है हम अपने बॉर्डरिंग एरियाज़ में भी देखें। नेब जो है अपना काम करेगी और इदारा है वो, और अगर किसी कहीं पर उनको नज़र आता है कोई करप्शन है तो उनको काम करने देना चाहिए, और एंटी करप्शन है तो एंटी करप्शन को अपना काम करना है। तो इन इदारों के काम है, उन्होंने अपनी विद इन लिमिट रहकर काम तो करना है। जी नाज़रीन, ज़िया हसन लंजार साहब जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि जो चवणु आहे त इजलास दौरान जेको आहे एंटी नारकोटिक्स जेका फोर्स ठाहिण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे उहा फोर्स ऐं सिंध पुलिस गॾिजी कमु कंदा ऐं उनखां सवाइ जेको आहे मंशियात में या अनमोल उर्फ पिंकी केस में जेको बि जहिड़े बि क़िस्म जी जेतिरी बि बाअसर शख़्सियत हूंदी उनखे जेको आहे बख़्श न कयो वेंदो ऐं उन्हनि खे जेको अंजाम ताईं पहुचायो वेंदो जवाबदारनि खे। इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण लाइ असांखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे असांजा चीफ रिपोर्टर आहिनि फयाज़ कुरैशी साहब। उन्हनि इहो सॼो इजलास आहे उहो कवर बि कयो आहे ऐं मुख़्तलिफ़
जेके मेंबर आहिनि या उन्हनि सां ॻाल्हियूं बि कयूं आहिनि। फयाज़ साहब वेलकम कयूं था तव्हांखे प्रोग्राम में। सभ खां पहिरियों इहो ॿुधाइजो त अॼु जे इजलास जी जेका कार्रवाई हुई उन जो जेको महवर जे खणी चइजे त अनमोल उर्फ पिंकी त ग़लति न हूंदो, छाकाणि त 1.5 कलाक ताईं उन ते जेको ॻाल्हायो वियो, ब्रीफिंग्स ॾिनियूं वयूं ऐं मुख़्तलिफ़ शयूं जेके आहिनि साम्हूं आयूं। त असांखे अॼु जे इजलास जो असांजे व्यूअर्स खे अहवालु ॾिजो त इजलास में अॼु छा थियो ऐं कहिड़ा कहिड़ा फ़ैसिला थिया। महिरबानी नईम साहब, जेका सिंध असेंबली जेका स्टैंडिंग कमेटी आहे घरू मामलनि बाबति, जंहिंजी चेयरपर्सन औरत विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सदर फरियाल तारपुर साहिब आहे, उन जी सदारत में इहो इजलास आहे। इजलास में जहिड़ी रीति तव्हां ज़िक्र कयो त 1.5 कलाक ताईं अनमोल और पिंकी जेको न सिर्फ़ु हावी रही बल्कि इन हवाले सां एडिशनल IG कराची आज़ाद खान समूरी जेका वेहक खे इन हवाले सां ब्रीफिंग ॾिनी ऐं पिंकी केस सां लाॻापियल जेके समूरा जवाबदार आहिनि उन्हनि जे हवाले सां आगाही ॾिनी। ॿुधायो त समूरा जवाबदार गिरफ़्तार आहिनि। आज़ाद खान खां मुख़्तलिफ़ मेंबरनि जेको दावा करण ते एतिराज़ थिया ऐं केतिरा ई जेके जवाबदार आहिनि उन्हनि जी गिरफ़्तारी जे हवाले सां पिणु फरियाल तारपुर साहिब जो चवणु हुयो त हिन वक़्तु ताईं ॿुधायो वञे त केतिरा जेके जवाबदार आहिनि अञा ताईं गिरफ़्तार न आहिनि थिया ऐं पिंकी जी गिरफ़्तारी जे बावजूदि जेके शहर में जेका मंशियात आहे, ख़ासि तौर ते कोकीन उनजी ख़रीदारी जारी आहे, त उन जेका कोकीन जो कारोबार आहे उहो केरु थो हलाए ऐं मेंबरनि हवाले सां सख़्तु सवाल कया। त 1.5 कलाक जेको बुनियादी तरह सां जेको इजलास ते पिंकी हावी रही त उनजो जेको असुलु जेको महवर हुयो उहे मुख़्तलिफ़ सवाल हुया इन हवाले सां, छाकाणि जो जिते मीडिया इन हवाले सां पिंकी ते रोज़ाने जी बुनियाद ते हिकिड़ी जेके ट्रायल थियनि था उन ते पंहिंजी जेका न्यूज़ हलाए थी, त उन ते हिकिड़ो आवाम जी जेका तवजो जो सबबु बि आहे, बल्कि ख़ासि तौर ते जेका पिंकी ब्रांड जेका मंशियात आहे उन सां केतिरनि नौजवाननि जी जिते जानियूं हुयूं, बल्कि इहा इन हवाले सां इहा बागाई ॾिनी हुई त इहा जेका मंशियात आहे इहा लाहौर या पंजाब जे इलाइक़नि में उते ठहंदी हुई ऐं उते इहा मशीनरी हुई जंहिंजे ज़रिए उहा तयारु कई वेंदी। बल्कि ज़िया लंजा साहब खां त इन हवाले सां सवाल बि कयो वियो, उन इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ कंदे चयो त इहा मंशियात जेका आहे उहा पंजाब में ठहंदी हुई, बल्कि उते इस्तेमालु घटि थींदी हुई, बल्कि इन जो इस्तेमालु सिंध में घणो थींदो हुयो। त इन हवाले सां इहा उतां खां सिंध में मुंतक़िल थींदी हुई ऐं इन बावजूदि इहो नेटवर्क जेको आहे हले थो त उन ते पिणु सवाल थिया ऐं इन हवाले सां घरू वधी जो चवणु हुयो त इहो परॾे मां नेटवर्क हले थो ऐं जेका बुनियादी तरह सां नाइजीरिया जो जेको ज़िक्र कंदे चयो वियो त नेटवर्क उतां खां फैलियल आहे, उतां खां वठी हेसी ताईं उन सिस्टम खे तोड़ण जे हवाले सां उहो कोशिशूं करे रहिया आहिनि। त इन हवाले सां जिते मेंबरनि पारां सख़्तु पुछाणो कयो वञे पुलिस खां या घरू खाते जे वज़ीर खां, त इन हवाले सां मीडिया बि जेका आहे पंहिंजो पुछाणो करे थी ऐं इन हवाले सां असां बि सख़्तु न सिर्फ़ु सवाल कया बल्कि इन हवाले सां इहो ॿुधायो वियो त जेको इजलास थियो उन में जेका मंशियात सां गॾोगॾु गुटके जो जेको इस्तेमालु आहे उन ते बि जेका सूरताल जेका उहा हावी रही। इन हवाले सां सिंध असेंबली जा मेंबर जिते इन कमेटी जा मेंबर आहिनि, सूबाई वज़ीर मेंबर आहिनि, त उते ख़ुसूसी तौर ते क़ौमी असेंबली जा जेके मेंबर आहिनि उन्हनि खे बि इन इजलास में शरीक करायो वियो, जंहिंमें नबील गबोल बि शरीक हुयो, कादिर पटेल साहब शरीक हुयो, अहिड़ी तरह सां आगा जेको रफ़ीउल आहे उहो बि शरीक हुयो। त पुलिस खे गुटके जे ख़िलाफ़ कार्रवाई करण जे हवाले सां ज़िक्र कंदे कादिर पटेल जो चवणु हुयो त पुलिस खे रुॻो इन सिलसिले में फसायो वियो आहे ऐं गुटके जे ख़िलाफ़ कार्रवाइनि सां हिक पासे पान वांगुरु थिए, माण्हू गुटके मां जेको मंशियात आहे उहो इस्तेमालु कनि था। सोपारी खे जेकॾहिं हल्को हथु यानी रिलीफ मिले थो त उहे समूरो जेको मामिलो जेको आहे उहो जेको अल्टर में डाइवर्ट थिए थो ऐं माण्हू सोपारी जो इस्तेमालु गुटके में कनि था, उन सां हिते कैंसर जो जेको मर्ज़ आहे उहो तमामु घणो वधी रहियो आहे। इजलास में जेको मोहम्मद फारूक जमायत इस्लाम जो मेंबर आहे उनजो बि चवणो त हिते का बि कैमरा न आहे त अनमोल केस जा जेके समूरा तफ़सील आख़िर छो नथा ॿुधाए वञनि। इजलास में इन हवाले सां बि जेको ज़रियनि ॿुधायो आहे ज़ोर ॾिनो वियो त जेके अनमोल 800 जेको मंशियात वापराईंदड़ जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जे नालनि जो ज़िक्र कयो आहे त उन्हनि नालनि जे हवाले सां जेके चूंडियल मेंबर आहिनि उन्हनि खे छो नथो आगाह कयो वञे। त इन हवाले सां बि सख़्तु पुछाणो कयो वियो, जेतोणीकि मोहम्मद फारूक सां मूं पर्सनली बि ॻाल्हि ॿोल कई, उन हुकूमती कोशिशुनि ते इतफ़ाक़ कंदे उनखे सारायो आहे। हिक पासे संदसि चवणो आहे त लॻे ईअं थो त हुकूमत चाहे थी त सिंध मां मंशियात जो जेको पाड़ पटी वञे, पर जेकॾहिं कोशिशूं संजीदगी सां ऐं ख़ुलूस नियत सां थींदियूं त खेसि यकीन आहे त मंशियात जे हवाले सां कार्रवाई थींदी। इहो जेको मर्ज़ चूंडियल नुमाइंदनि जी औलाद ताईं पहुतो आहे त इहे रुॻो आए बाए शाए वारो जेको मामिलो न हुजणु घुरिजे, इहा ॻाल्हि जेको वेहक ताईं नशस्तुनि गुफ़्तनि बरख़ास्तुनि वारो सिलसिलो न हुजणु घुरिजे ऐं उन ते बाज़ाब्ता कमु थियणु घुरिजे। मंशियात केस में जिते मारूफ़ अदाकार जो पुटु जेको ज़मानत आहे
उन ते काम कमेटी में जेको मुकालमा थिया ऐं अनमोल कैसेज जेको शख्स जेल में आहे उन ते बैंक अकाउंट ऑपरेट करण जे हवाले सां सवाल थींदा रहिया ऐं पुलिस पारां इन हवाले सां सवालनि जा जवाब न हुया। ॿुधायो गुटको खाइण सां जिते मुंहं जो कैंसर थिए थो उते औरतूं जेको गुटको खाई रहियूं आहिनि बहिराड़ी में हिन जो इस्तेमालु तमामु घणो जेको थिए थो त इन हवाले सां हुनजी रोकथाम जेका तमामु घणी ज़रूरी आहे। जहिड़ी तरह सां मूं ज़िक्र कयो त पिंकी जो जेको नाइजीरिया अचण वञण जे हवाले सां जेको मामिलो साम्हूं आयो त इन हवाले सां काइम कमेटी खे सिंध पुलिस ब्रीफिंग ॾिनी फयाज़ जे तव्हां ॿुधायो त जॾहिं सवाल कयो वियो त पिंकी खे जॾहिं गिरफ़्तार लाहौर मां कयो वियो त इन ते सिंध हुकूमत ख़ामोशी अख़्तियार कई, इन जा कहिड़ा सबब आहिनि या अञा ताईं क्लियर कट इहो छो नथो चयो वञे त पिंकी खे लाहौर मां गिरफ़्तार करे आंदो वियो, इन जा सबब कहिड़ा आहिनि, उन जे बाबति तव्हां सवाल कयो घरू वज़ीर खां या कमेटी में अहिड़ो क़िस्म जो सवाल थियो? बिल्कुलु इन हवाले सां सवाल बि थियो पर ज़ाहिर इन बुनियाद ते इन ॻाल्हि खे गोलमोल कयो वञे थो त जॾहिं असां अहिड़नि माण्हुनि ते हथु विझूं था त उन हवाले सां हू उन्हनि ॻाल्हियुनि खे डिस्क्लोज़ नथा करणु चाहिनि त उन हवाले सां जेको साइलेंट जेको फीचर आहे उहो साम्हूं अचे थो, उहो ख़ामोशी इख़्तियार कई वञे थी ऐं नतीजतन इहो चयो वञे त मीडिया में ख़बरूं हली रहियूं आहिनि त पिंकी खे लाहौर मां गिरफ़्तार कयो वियो ऐं पुलिस इन हवाले सां जेका ख़ामोशी इख़्तियार करे थी ऐं पिंकी जा जेके सप्लायर आहिनि उन ताईं मामिलो डाइवर्ट कयो वञे थो ऐं जेके राइडर आहिनि उन्हनि जी गिरफ़्तारी जो जेको जवाबु ॿुधायो वञे थो उहे जेके आहिनि उहे गिरफ़्तार कया विया आहिनि ऐं पुलिस हिकिड़ी अहम शख़्स ते नालो वठण खां जेको इनकार कयो जंहिंजे हवाले सां इहो पुछा कई हुई त कहिड़ा कहिड़ा माण्हू मुलवस आहिनि ऐं जेका पिंकी केस में अहम शख़्सियत मुलवस हुजण जे हवाले सां पब्लिक करण जो मुतालबो कयो वियो त अहिड़ा माण्हू जेके माशरे जा नासूर आहिनि उन हवाले सां उन्हनि माण्हुनि खे ज़ाहिर थियणु घुरिजे ऐं आम आवाम खे बि ख़बर पवणु खपे त हुननि जी ज़िंदगीअ सां केरु खेॾी रहियो आहे त इन हवाले सां बि मेंबरनि ज़ोर ॾिनो इजलास में त उन्हनि माण्हुनि जा नाला न सिर्फ़ु ओपन कया आहिनि बल्कि मीडिया ते नशर कया वञनि जीअं माण्हुनि में उन्हनि जे हवाले सां आगाही मिले ऐं कहिड़ा कहिड़ा माण्हू जेके आहिनि उहे जेके वाइट कॉलर जेको क्राइम करे माण्हुनि जी जानियुनि सां खेॾनि था त ज़ियाउल इंजाफ़ साहिब जो चवणो हुयो त हिन वक़्त ताईं कंहिंजो बि नालो वठणु वक़्त सां अॻु हूंदो ऐं छाकाणि जो जांच जारी आहे ऐं पुलिस हिन हवाले सां तफ़सीली जिते ब्रीफिंग ॾिनी आहे उते नार्कोटिक्स जे हवाले सां जेको फोर्स बनाइण जे हवाले सां फ़ैसिलो हिकिड़ो साम्हूं आयो आहे। इन हवाले सां घरू वज़ीर खां सवाल बि कयो संदसि चवणो त आर्टिकल जेको 27-28 आहे उन जे तहत जेको पुलिस ऐं जेको नार्कोटिक्स खातो आहे उन्हनि जा ॿिन्हिनि जा जेके इख़्तियार आहिनि उहे हिकु जहिड़ा आहिनि ऐं हिकु जहिड़े इख़्तियार हुजण जे नाते सां पुलिस खे जेको पावरफुल बढ़ाइण जे हवाले सां नार्कोटिक्स बि अगरि जेकॾहिं कार्रवाई करे थी त पुलिस बि कार्रवाई करे सघंदी त पुलिस जा जेके इख़्तियार आहिनि उन्हनि में बि जेका वाद कई वई आहे जीअं मुंशियात जे ख़िलाफ़ उहो पुलिस बि गॾिजी करे कमु करे सघे त नार्कोटिक्स जो खातो आहे इन हवाले सां बि ज़रूरु इन हवाले सां गौर वीचार थियो आहे पर मुमकिन आहे त इन हवाले सां हू डिस्क्लोज़ न करणु पिया चाहिनि। ज़रिए इहो ॿुधायो आहे त इहो कोशिशि पई थी थिए त नार्कोटिक्स जो जेको खातो आहे उनखे एक्साइज़ खां अलॻि करे जेको घरू खाते जे मातहत कयो वञे ऐं घरू वज़ीर पुलिस ऐं नार्कोटिक्स खे गॾु डील कंदे साॻिए इस्मनि ऐं मंशा जे हवाले सां न सिर्फ़ु कार्रवाई करे ऐं हुन जवाब जेको ॿुधायो उन में इहो हुयो त नार्कोटिक्स जेका फोर्स आहे उन्हनि वटि एतिरो अमलो न आहे जो पूरे सूबे जे 3 ज़िलनि में कमु करे सघे ऐं ज़ाहिर हुन जे लाइ हिकिड़ी वॾी लश्करी इहो ॿुधाइजो त हे जेके असां ख़ासि करे जेको एजाज़ ज़खरानी जे पुट जी जेको मौत थियो हिकिड़ो अलमनाक मौत हो उन खां पोइ असां ॾिसूं था या जेके उमरा तबिको आहे असांजो अमीर तबिको आहे उन्हनि जी जेका नओं नसल आहे उहो मंशियात जे तरफ़ इलाही घणो उनजो आदी थी चुको आहे। जेके हिन महिल ताईं जा क़दम आहिनि या इजलास आहिनि इहे अॻु बि थींदा रहिया आहिनि, अॻु बि अहिड़े क़िस्म जूं टास्क फोर्स ठहियूं आहिनि, अॻु बि अहिड़े क़िस्म जा इजलास थिया आहिनि ऐं कार्रवायूं बि थियूं आहिनि पर मंशियात जो हिन महिल पिंकी गिरफ़्तार आहे त अॼु बि कराची शहर में इहो जेको मंशियात जो नासूर आहे उहो अॼु जीअं जो तीअं जारी आहे त इन जेके हुकूमत जा क़दम आहिनि तव्हांखे लॻे थो त इहे इनफ आहिनि या उहे बाक़ाइदे संजीदा नज़र अचनि था अहिड़े क़िस्म जी जेका कार्रवाई लाइ त हितां जेको मंशियात जो ख़ात्मो थिए? बिल्कुलु इहो तव्हांजो सवाल नईम साहिब इंतहाई अहम आहे ऐं मुंहिंजो हिन पासे ई जेको हाणे टर्न हुयो त तव्हांखे इहा इंतहाई अहम जेका ॻाल्हि ॿुधायां छाकाणि जो जॾहिं शर्जील मेमन साहिबु जॾहिं एक्साइज़ खाते जो वज़ीर हुयो त उनजो इन मामले ते तमामु घणो ज़ोर हुयो त जेके तालीमी इदारनि में जेका मंशियात जो जेको इस्तेमालु थिए थो उनजी रोकथाम कजे ऐं उन्हनि तालीमी इदारनि में डॉप टेस्ट जे हवाले सां ड्रग टेस्ट जे हवाले सां ॻाल्हियूं अक्सर कंदो रहियो ऐं हू इन ॻाल्हि ते ॾाढो कंसर्न हुयो। मूंखे ॿियो जेकॾहिं हुकूमत जी जेकॾहिं ग़लतियूं हुजनि उन ते इख़्तिलाफ़ जेकॾहिं हुजनि त ज़हनी सोच अलॻि थी सघे थी पर हुकूमत जी मंशा जे हवाले सां अॻुवाट जेको खजंदड़ जेको क़दम हुयो जंहिंमें शर्जील मेमन जी सारा करणु लाज़मी ठहे थी
छाकाणि जॾहिं हुन आबकारी खातो हुयो, एक्साइज जो खातो हुयो ऐं नार्कोटिक्स जो खातो हुयो, त हुन हिन सेंस में तमामु घणो कमु कयो ऐं हुन जेका तालीमी इदारनि ताईं रसाई जी कोशिशि करण जे हवाले सां तमामु घणी अॻुभराई कई हुई ऐं बदकिस्मती सां कुझु इशूज़ अहिड़ा थिया जंहिंजे करे हुन खां जेका वज़ारत जेका आहे उहा वापसि मुंतकिल थी, त उहो कमु जेको आहे उहो अधूरो रहिजी वियो। हालांकि मुकेश कुमार चावला साहिबु हिन हवाले सां तमामु घणो कमु करे पियो, पर उन में तदरीसी इदारनि जी जेका शमूलियत आहे उहा अंतहाई अहम हुई। अॼु जो जेको इजलास हुयो हुन में तालीम वारो जेको वज़ीर हुयो सैयद सरदार शाह, जी जी उनखे ख़ासि तौर ते ख़ुसूसी तौर ते जेको इन हवाले सां ब्रीफिंग ऐं इन हवाले सां जेका मालूमात वठण जे हवाले सां घुरायो वियो हुयो, शिरकत कराई वई हुई। छाकाणि जो मंशात जेका आहे उहा तालीमी इदारनि तां जेका पहुती आहे उहा ख़ुसूसन जेके ख़ानगी स्कूल आहिनि, ख़ानगी कॉलेज आहिनि ऐं ख़ानगी जेका यूनिवर्सिटीज़ जा जहिड़ा जेके इदारा आहिनि उन्हनि ताईं जेका पहुचणु इहो हिकिड़ो वॾो मसइलो आहे। ऐं हुकूमत इन हवाले सां कंसर्न आहे त जेका मंशात जा जेके टेस्ट आहिनि उहे जेके तालीमी इदारनि में थियणु घुरिजनि, जंहिं ते जेकॾहिं शक हुजे ऐं वालिदेन खे ख़ामोशी सां रज़ामंद कजे। तव्हां जेकॾहिं गुज़िरियल साल जा शहजीद मेमन साहिब जी वज़ारत जे दौरान जेकॾहिं इहे क्लिप जेकॾहिं ॾिसंदो त हुन में इहो बाज़ाब्ता ज़िक्र हूंदो हुयो त हुन तमामु घणी हिन हवाले सां कोशिशि कई ऐं हिकिड़ी हाई पावर कमेटी ठाहिण जे हवाले सां हुनजी तजवीज़ हुई। त अॼु जो जेको इजलास हुयो हुन में सरदार शाह जी जेका ब्रीफिंग थी त उन ते हुन बाज़ाब्ता ॿुधायो त स्कूलनि में ख़ानगी स्कूलनि में वञणु हिकिड़ो वॾो मुश्किल मरहलो आहे ऐं ॿारनि जा जेके मंशात जेके टेस्ट आहिनि हू नथो कराए सघे। उन बाज़ाब्ता हवाले सां न सिर्फ़ु इन ॻाल्हि खां जेका एनआरआफी कई त हू अहिड़ो कमु नथो करे सघे इन हवाले सां, छाकाणि जो कानून साज़ी जी ज़रूरत आहे ऐं माशरे में हिकिड़ी जेका अनसर्टेनेबिलिटी जेका पैदा थींदी, छाकाणि जो हिकिड़ो ग़रीब ॿार आहे उन ताईं जेका रसद उहा आसान आहे, पर हिकिड़ो जेको बासिर माण्हू या ताक़तवर माण्हू या पैसे वारो जेको माण्हू या हिकिड़ी डिफेंस जहिड़े पोश इलाइक़नि में रहंदड़ जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जे ॿारनि ताईं हथु विझणु हिकिड़ो वॾो हुकूमत जे लाइ मसइलो थिए थो। ऐं हुन मामले में सरदार शाह तफ़सीली ब्रीफिंग ॾिनी ऐं हिन ॻाल्हियुनि खे कुझु मख़फ़ी रखियो वियो ऐं ॿुधायो वियो त इन हवाले सां हुकूमत कानून साज़ी करणु चाहे थी। घरू खातो, नार्कोटिक्स खातो, तालीम खातो गॾिजी करे इन हवाले सां अॻुभराई करे, जहिड़ी तरह सां तव्हां जखराणी साहिब जी ॻाल्हि कई या ॿिया जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उन्हनि जो जेको औलाद आहे उन्हनि ताईं बि इहा मंशा जेका पहुती ऐं हुननि जी जान वई, त इहो हिकिड़ो हुकूमत जे लाइ हिकिड़ो वॾो अलमियो ऐं हुन जे हवाले सां तारीख़ वठण वारो जेको कमु आहे उन ते हुकूमत संजीदगी सां सोचे रही आहे। ऐं हिकिड़ी आला सतह जेका हाई पावर कमेटी ठाहिण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, जंहिंमें अपोज़िशन जे मेंबरनि जेको हुकूमत खे साथ ॾियण जो यकीन ॾियारियो आहे ऐं इहो चयो आहे त मंशात फरोशन जे ख़िलाफ़ गॾियल हिकिड़ो ऑपरेशन कयो वञे, जीअं हिन मामले मां न सिर्फ़ु सिंध जे ॿारनि खे निजात मिली सघे बल्कि सिंध जे लाइ इहो हिकिड़ो चैलेंज जेको आहे उन मां असां जान छॾाए सघूं। वॾी महिरबानी फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, फयाज़ कुरैशी जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि जो इहो चवणु हो त जेके सिंध हुकूमत जा क़दम आहिनि उहे हिन दफ़े संजीदा नज़र अचनि था, पर साॻी जाइ ते जेकॾहिं जे फयाज़ हवालो ॾिनो त जॾहिं शर्जील इनाम मेमन साहिब जन वज़ीर हुआ त उन्हनि तमामु घणा सुठा इनिशिएट कया, पर बदकिस्मती सां उन्हनि खां इहा वज़ारत वई हली ऐं उन्हनि जो खातो चेंज थी वियो। त जॾहिं हाणे ॻाल्हि ग़रीब जे ॿार ताईं नाहे पहुती, छाकाणि त हिन में जेका मंशियात जो जेको इहो कुदो धंधो आहे इन में ऐं जेके असांजा अमीर तबिको आहे या सियासतदाननि जा ॿार आहिनि या कंहिंजा बि ॿार आहिनि उहे हिन में एतिरो त इन्वॉल्व थी चुका आहिनि जो हाणे उनखे पंहिंजे लाइ वॾो चैलेंज सम्झनि था। हिन जे करे असांखे जेके फुर्तियूं नज़र अचनि थियूं, पर सुवाल हिते वरी बि उहो ई आहे त छा जेकॾहिं हुकूमत बि हिन में संजीदा आहे ऐं इदारा नार्कोटिक्स सिंध हुकूमत सिंध पुलिस उन में संजीदा आहे त उहे जेके ॻुझा हथ आहिनि जेके इन में मुआशिरे जी बहितरी नथा चाहिनि, मंशियात जो जेको विकिरो ऐं वाइपो आम था चाहिनि, उन्हनि खे कीअं कमज़ोर कजे ऐं उन्हनि जा जेके आहिनि हथ कीअं रोकजनि, इहो हिकिड़ो अञा ताईं सुवालु आहे। असां उमेद था करियूं त जेके सिंध हुकूमत जा क़दम आहिनि उहे जेके आहिनि एतिरा असराए था थियनि जो मंशियात जहिड़े ज़हर खां असांजे ईंदड़ नसल खे जेको आहे ऐं मौजूदा जेको नसल आहे उनखे जेको आहे बचाइण लाइ जेको आहे हथी मिले ऐं उन्हनि मंशियात विकिरो कंदड़नि डीलर आहिनि, उन जा जेके राइडर आहिनि, उन्हनि जा जेके हैंडलर आहिनि, उन्हनि सभिनी खे कानून जे कटड़े में आंदो वञे त जीअं हिन मुआशिरे मां मंशियात जो नासूर ख़तमु थिए। हिते वक़्तु आहे शार्ट कमर्शियल ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में ॻाल्हि पई हले
सिंध असेंबली जी घरू मामलनि बाबति स्टैंडिंग कमेटी जे इजलास जी ऐं उन में मुख़्तलिफ़ फ़ैसिला कया विया आहिनि, ब्रीफिंग्स ॾिनियूं वयूं आहिनि। पिंकी उर्फ़ अनमोल उर्फ़ पिंकी जे केस वारे हवाले सां बि तमामु घणियूं ॻाल्हियूं कयूं वयूं आहिनि ऐं अपोज़िशन तरफ़ां मुतालबा कया विया त जेके पिंकी केस में जेके हाई प्रोफाइल माण्हू आहिनि या अहम शख़्सियतूं आहिनि उन्हनि खे पब्लिक कयो वञे, जंहिंखां सिंध हुकूमत मना करे छॾियो, छाकाणि त घरू वज़ीर ज़िया लंजार जो इहो चवणु हो त जांच हलंदड़ आहे ऐं ॿिया बि जेके जवाबदार आहिनि उहे गिरफ़्तार कया वञनि था ऐं उन जे करे इन्हनि जे जेको शख़्सियतुनि जा नाला करण जी का ज़रूरत नाहे। इन सिलसिले में इहो जेको सवाल कयो वियो, मुतालबो कयो वियो, जमात इस्लामी जे MPA मोहम्मद फारूक तरफ़ां कयो वियो, हिन वक़्तु असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। फारूक साहब वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। फारूक साहब, किस तरह से देख रहे हैं इनिशिएट को सिंध गवर्नमेंट एक बहुत अरसे के बाद हमें किसी इकदाम में बहुत संजीदा नज़र आ रही है और कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, अनमोल और पिंकी जैसे मंशियात फरोश गिरफ्तार हैं और उसके अलावा इनके साथी भी कुछ गिरफ्तार हुए हैं, तो इससे यहाँ तक की जो कार्रवाई है, यहाँ तक की जो इक़दामात हैं, इससे आप कितने मुतमईन हैं और आपने जो मुतालबा किया इजलास के दौरान कि जो अहम शख्सियात हैं उनको पब्लिक किया जाए, तो उस पर क्या रिस्पॉन्स था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें तो आने वाला वक्त बताएगा कि सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी इस मामले के अंदर कितनी संजीदा है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की गिरफ्तारियां होती रही हैं और वो फाइल हो जाती है, बेल हो जाती है, बाहर आ जाते हैं या फिर वो लोग जेल में ही जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उनको प्रोटोकॉल भी मिल रहा होता है। अरमगान का केस और इससे पहले वो कोई जतोई का केस, इस तरह के केसेस जो हैं उससे पहले भी मौजूद हैं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी को या सिंध गवर्नमेंट को इस केस को एग्जाम्पल बना देना चाहिए, मिसाल बना देनी चाहिए, और ताकि आइंदा कोई इस तरह की कार्रवाई ना हो। मैंने जो वहाँ पे प्रेजेंटेशन पूरी पेश हुई थी उसमें कुछ सवालात उठाए थे और उसमें सरफहरिस्त सवाल यही था कि आपने नीचे बाइक राइडर्स और नीचे जो उसका पूरा नेटवर्क था, उस नीचे वाले नेटवर्क को तो आपने पकड़ लिया जो उसके आलाकार बने हुए थे और तनख्वाह पे उसने रखे हुए थे, लेकिन जो लोग इसकी सरपरस्ती कर रहे थे वो कौन लोग हैं? अगर वो इतनी जो है अपने जो उसका स्टाइल था पहली पेशी के ऊपर और जो उसके वॉइस मैसेजेस आए हैं उसके अंदर जो उसकी भड़के हैं, यकीनी तौर पे कोई ना कोई तो बासार आदमी है और बासार ग्रोह है जो इसकी सरपरस्ती कर रहा है। ये तो एक करेक्टर नजर आती है खाली अनमोल। तो मेरा सवाल यही था उसमें कि इन लोगों को भी आप बताएं, इन लोगों का इनका नाम भी यहाँ करें, और अगर आप पब्लिक नहीं कर सकते तो कम अज कम जो है वो इस कमेटी के अंदर भी इन कैमरा इजलास करके, इन कैमरा ब्रीफिंग करके इसके हवाले से जो है वो इसको इस कमेटी को एतमाद मिले। तो इसका उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इन्वेस्टिगेशन जैसी मुकम्मल होगी तो जो है वो फिर लाजमी हम लोगों को इस हवाले से आगाह कर देंगे। दूसरी चीज़ ये कि कुछ जो है वो अकाउंट्स की कुछ डिटेल आई थी, उस पर भी मेरा एतराज़ यही था कि अकाउंट्स की डिटेल ये भी असल अकाउंट नहीं है बल्कि ये कोई नीचे के अकाउंट हैं इसकी, क्योंकि उसके अंदर अमाउंट कोई बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं थी, उसकी भी तफसीलात उनको मालूम नहीं थी कि इस अकाउंट से जो है वो किसको पैसे ट्रांसफ़र होते रहे हैं, इस अकाउंट में जो है वो किस तरह डेबिट और क्रेडिट कितना होता रहा है, इसकी तफसीलात भी उनके पास नहीं थी या तफसीलात वो रखना नहीं चाह रहे थे। तो ये बात मैंने ज़रूर की। तीसरी सवाल मैंने उनसे ये किया कि अगर क्रॉस बॉर्डर हो रहा है, पाकिस्तान के बाहर से अगर कोई चीज़ आ रही है और या सूबे का बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, लाहौर पंजाब से अगर यहाँ पे कुछ सामान आ रहा है, तो हमारी एंटी नारकोटिक फोर्स क्या कर रही है, हमारा कस्टम क्या कर रहा है, हमारे अगर ये बाहर से जो है वो कुछ कोरियर्स के पैकेट के ज़रिए से जो है वो यहाँ पर आइस आ रही है, यहाँ पर वीड आ रही है, तो कोकीन आ रही है, तो फिर हमारे पास क्या उस पैकेट को किसी स्कैनर से गुजारे बगैर ही जो है वो क्लियर कर दिया जाता है हमारे एयरपोर्ट के ज़रिए से, और जो कोई कोरियर सर्विस लेके आ रहे हैं। तो ये वो 3-4 सवालात थे जो मैंने वहाँ पे किए थे, लेकिन मुझे इसके कोई जो है वो खातिर ख्वाह
اور تسلی بخش جوابات نہیں مل سکے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہاں پہ کوئی کمیٹی کی بات کی گئی اور اس میں یہ بھی بات جو ہے وہ میں نے کی اور بعد میں میڈیا سے بھی کی کہ جو ہے وہ اس کمیٹی میں بھی ساری پارٹی کو جو ہے وہ شامل کیا جائے، کیونکہ یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، پورے صوبے کا مسئلہ ہے. منشیات جیسی لعنت ہے، اس لعنت سے اگر نبض آزما ہونا ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے تو سب کو مل کے کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اپوزیشن پارٹی کو بھی آن بورڈ لیا جائے. اسی طرح سے جو ہے وہ پریشر لے سکتے ہیں، اسی طرح سے چیزیں شفاف ہو سکتی ہیں، تحقیقات بھی شفاف ہو سکتی ہیں، اور سزا اور جزا کا نظام بھی جو ہے وہ مزید مضبوط کیا جائے. وہاں ایک بات اور بھی آئی کہ لوگ جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں اور قانون سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، بیل ہو جاتی ہے یا باہر آ جاتے ہیں، تو قانون پہ امپلیمنٹیشن بھی جو ہے حکومت کا کام ہے، اور اس کلاس کو بھی جو ہے وہ صحیح کیا جائے، بہتر کیا جائے، تاکہ لوگوں کو سزا ہو سکے. ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹ کے ذریعے سے جو سزا ہونے کا تناسب ہے وہ بہت ہی کم ہے، صرف 3% پر ہے. تو 3% پہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں سزا ہونی چاہیے. جزا اور سزا کا نظام جب تک نہیں ہوتا یہ ہے کہ ہونے والے کہتے ہیں کچھ دن گزر جائے گا، اس کے بعد بیل ہو جائے گی، ہم باہر آ جائیں گے اور پھر دوبارہ اس دھندے کو شروع کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے منشیات کی لعنت ہمارے صوبے سے، ہمارے شہر سے اور ہمارے ملک سے ختم نہیں ہو پا رہی ہے. اچھا فاروق صاحب، جس طرح سے آپ نے بولا کہ مختلف ہائی پروفائل کیس ہم نے ماضی میں بھی دیکھے، پر اس دفعہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تو اب ایک تو ہوتے ہیں نچلی طبقے والے اور ایک ہوتے ہیں مڈل کلاس، ایک ہوتے ہیں عمرہ. اب یہ جو منشیات معاملہ اب مڈل کلاس کا یا لوور کلاس کا رہا نہیں، اب یہ ہو گیا ہے ایلیٹ کلاس کا. ان کے لیے وبال جان بن گیا ہے، ان کے جو بچے ہیں ان کے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب جس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، اور ان میں سنجیدہ نظر آ رہی ہے حکومت اور کچھ نہ کچھ کر لے گی؟ نہیں ابھی بھی کم ہے، مجھے نہیں اتنی بہت زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آتے. میں سمجھتا ہوں ابھی مزید کارروائی تیز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ایسے ہی نیٹ ورک درجنوں اس کراچی شہر کے اندر موجود ہے. آن لائن جو ہے وہ منشیات بالکل بک رہی ہے، تعلیمی اداروں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، پرائیویٹ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ان کا نیٹ ورک موجود ہے. اس نیٹ ورک کو توڑنے کی جو ہے وہ کیا ان کی پلاننگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ مزید ان کو کرنا پڑے گا، مزید سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے ان کو قانون سازی بھی کرنی پڑے گی، اور جو پہلے قانون بنے ہوئے اس پہ امپلیمنٹیشن کی طرف بھی جو ہے ان کو مزید قدموں کو تیز کرنا پڑے گا. سزا کا نظام جب تک نہیں بنائیں گے، اور اس میں جو بااثر لوگ ہیں وہ خواہ منسٹر ہی کیوں نہ ہوں، اپوزیشن اور سیاسی پارٹیوں کے سربراہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر وہ اس کے اندر انوالو ہیں تو ان کے نام بھی آنے چاہیے اور ان سب کو سزا ہونی چاہیے. انصاف جب ہی پنپ سکے گا، حالات یہاں کے جب ہی بہتر ہو سکیں گے جب بااثر یا غریب یا امیر کوئی بھی جرم کرے اس کو اس کی صحیح سزا ملنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارا نظام انصاف بھی جو ہے وہ عدلیہ بھی جو ہے وہ مفلوج ہے، اور وہ انصاف فراہم کرنے کے اندر ناکام رہی ہے. بہت بہت شکریہ محمد فاروق صاحب. ناظرین، محمد فاروق صاحب جو ॻाल्हि ॿुधी उन्हनि जो इहो चवणो त सिंध हुकूमत बिल्कुलु इनिशिएट करे रही आहे, पर ओतिरी संजीदगी अञा ताईं हुनखे नज़र नथी अचे, छाकाणि त जीअं तालीमी इदारनि में इहो ज़हर तेज़ीअ सां पखिड़िजी रहियो आहे, उनखे रोकण लाइ का स्ट्रेटजी न आहे, का हिकमत अमली न आहे. उन खां सवाइ सिर्फ़ु इहा अनमोल पिनकी हिकु आहे. अहिड़ा केतिरा ई डीलर आहिनि जेके शहर में अॼु बि मुतहरिक आहिनि. ऑनलाइन जेके आहिनि ड्रग्स उहे हलनि था, नौजवान नस्ल तबाह थी रहियो आहे, ऐं इनखे बि ॿुझो ॾियण जी ज़रूरत आहे. हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे PP जी जेको आहे त अॻुवाण आहिनि, MP आहिनि, शर्मिला फारूकी साहबा. पाण इजलास में भी मौजूद हुई, उन्हनि खां पुछंदासीं इजलास जो हवाला ऐं सिंध हुकूमत के कदमनि के बारे में. शर्मिला साहबा को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में. शर्मिला साहबा, आज के इजलास में अपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ मुतालबात किए गए, और उसके अलावा उन्होंने ये भी मुतालबा ये भी शामिल था जिसमें कि पिंकी केस में जो भी अहम शख्सियात शामिल हैं उनके नाम पब्लिक किए जाएं, तो उनसे सिंध हुकूमत ने मना कर दिया. तो बता सकती हैं कि किस वजह से ऐसी चीज़ें मना की गई हैं, क्योंकि ये मंशियात का मामला जो है बहुत संजीदा है जिससे हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, तो ऐसी शख्सियात के नाम क्यों नहीं सामने आने चाहिए? जी बहुत शुक्रिया. देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमें हुकूमत की और सिंध पुलिस की का सराहना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने भरपूर तरीके से कार्रवाई करी
اور ایک بہت اہم کردار جس کا کی ہے اس کی گرفتاری سامنے عمل میں آئی۔ اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے محترمہ فریال تارپور صاحبہ جو ہیں، آج کے اجلاس کے اندر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ پنکی نامی خاتون جو منشیات فروش تھی اور جنہوں نے کراچی میں بالخصوص منشیات کا جال پھیلایا تھا، ان کی گرفتاری جو کافی عرصے سے درکار تھی وہ عمل میں آئی، اور اس میں سندھ پولیس کی کاوشوں کو، ANF کی کاوشوں کو بالکل سراہنا چاہیے۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پولیس کام نہیں کرتی، لیکن جہاں کرتی ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے پیچھے جو اہم شخصیت جنہوں نے، جس کی وجہ سے یہ گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں اور صوبہ سندھ کے اندر جو منشیات کے خاتمے کے حوالے سے جو مہم چلی ہے اس کو بالکل سراہنا چاہیے، اور ان کا نام محترمہ فریال تارپور صاحبہ ہے۔ صحیح، بھرپور طریقے سے پچھلے 2 سال سے ان کی کاوشیں جاری تھیں کہ اس لعنت سے صوبہ سندھ کو نجات ملے، اور الحمدللہ ان کی کاوشیں رنگ لائی ہیں، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور یہ جو ایک جال پھیلایا ہوا تھا اور جو مزید جو سپلائرز تھے، جو ان کے ساتھ جو کام کرتے تھے، وہ تمام لوگ، وہ افراد، ان کی بھی گرفتاریاں سامنے آئیں گی۔ چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی نوجوان قوم کو اس لعنت سے بچانا ہے۔ بالکل اس میں کون سے نام شامل ہے نہیں ہے، کون ان کو جاننا چاہتے، یہ بات اہم نہیں ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ نیٹ ورک کا خاتمہ ہو، اس منشیات کی جو لعنت ہے اس کو نجات ملے۔ اور میں تو یہ کہوں گی کہ چونکہ پنکی کا تعلق لاہور سے تھا اور کافی عرصہ یہ لاہور میں بھی رہی، لیکن پنجاب پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی، اور جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ایک پنجاب پولیس کے ایک DSP سے شادی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ان کو پولیس پروٹیکشن بھی مل رہی تھی پنجاب کے اندر۔ صحیح، لیکن سندھ پولیس کی کارروائی سے اور ANF کی کارروائی سے اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی نشاندہی کے اوپر ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اب اہم چیز یہ ہے کہ اس خاتون کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور اس کے تھرو بہت سارے الگ دوسرے جو نیٹ ورکس ہیں، جو باقی لوگ اس منشیات کی فروغ میں اور پھیلاؤ کے اندر جو ملوث ہیں، ان کی بھی گرفتاری آئے اور اس سے بھی ہمیں نجات ملے۔ اچھا شرمیلا صاحب، بالکل سندھ حکومت کا جو اقدامات قابل تعریف ہیں، مگر جو جس طرح سے آپ نے بولا کہ پنجاب میں ان کی فیکٹری تھی، پر جو رپورٹ بتائی، جو بریفنگ میں آج آپ بھی شامل تھی، بتایا گیا کہ وہ ان کی فیکٹری تو لاہور میں تھی، پر جو سپلائی ہوتی تھی اور جو منشیات کا پورا نیٹ ورک ہمارے کراچی میں تھا، تو اس وجہ سے یہاں پہ کارروائی۔ اور ایک سوال بھی کیا گیا کہ کیا پنکی کو لاہور سے گرفتار کیا گیا، تو اس پر سندھ حکومت نے خاموشی اختیار کی۔ میں اس وجہ سے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر ایسی اہم شخصیات جو بااثر ہیں، جو اس لعنت، جو منشیات کی لعنت ہے جس میں ملوث ہیں، ایسے کرداروں کو تو سامنے آنا چاہیے نا۔ دیکھیے، پنکی جو ہے وہ ایک نیٹ ورک چلا رہی تھی لاہور میں بیٹھ کے، وہ کراچی میں ایک نیٹ ورک چلا رہی تھی، ان کی گرفتاری آئی ہے۔ پنکی ایک پلیئر ہے اس پورے نیٹ ورک کے اندر، پنکی جیسی اور بھی بہت ساری ہوں گی، بالکل، یا ہوں گے، ان کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ ابھی تک تقریباً 7,550 لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اس حوالے سے، جب سے پنکی کی گرفتاری ہوئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے جس کا خاتمہ کرنے کے لیے سندھ پولیس جو ہے بڑی پرعزم ہے، اور یہ خاتمہ صرف سندھ میں نہیں ہوگا نا، اس کے تانے بانے جا کے جڑتے ہیں پنجاب سے، کہیں اور سے، دیگر جگہوں سے، تو ان کا بھی خاتمہ ہوگا۔ ابھی تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ سپلائی کہاں سے ہوتی تھی، کون سے ایسے چیک پوائنٹس ہیں جہاں پر جہاں سے یہ گزرتی تھی، کچھ باہر ملک سے بھی آ رہی تھی، وہ بھی چیزیں ہیں۔ یہ بہت، دیکھیں، یہ کوئی ایک چھوٹا سا کام تو ہے نہیں کہ پنکی گھر بیٹھی تھی اور وہ کچھ بنا رہی تھی اور پھر وہ بیچ رہی تھی، یہ کہیں سے تو آ رہا تھا، اور کہاں سے آ رہا تھا اس حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو میں شاید آپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ کمیٹی کے اندر ہوئی ہیں، اور ظاہری بات اس وقت اگر میں ڈسکلوز کروں گی تو جو دیگر لوگ ہیں، ابھی تو اور گرفتاریاں ہونی ہیں، لوگوں کو پکڑنا ہے اور لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، تو میں زیادہ بات نہیں کروں گی، لیکن اس بات کا میں آپ کو ضرور اطمینان دلاؤں گی کہ کوئی بھی کسر چھوڑی نہیں جا رہی۔
अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि ये जो हाई पावर फोर्स बनाने का फैसला किया गया है उसके बारे में बता सकती हैं कि उनका जो किरदार होगा क्या होगा, और क्या एंटी नार्कोटिक्स को एक्साइज से निकालकर पुलिस के मातहत किया जा रहा है? देखिए जी, इस हवाले से तो आज की कमेटी में ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन पिछली कमेटी में जरूर बात हुई थी कि एक डेडिकेटेड फोर्स बनाई जाए। ये बिल्कुल कमेटी के मेंबरान की अपनी एक आरा थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि देखिए हमारे पास पुलिस है, हमारे पास ANF है, हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसीज है, हमारे पास रेंजर्स हैं, और हमारे पास एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, हमारे पास एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है। ये तमाम इदारे हैं, और मैं समझती हूँ कि अगर इनमें कोऑर्डिनेशन हो तो मैं नहीं समझती कि कोई नई फोर्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। अभी आप देखिए पिंकी की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई कि जब सिंध पुलिस ने ANF के साथ मिलकर और इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर उसको गिरफ्तार किया, तो यही कोऑर्डिनेशन रही तो इंशाल्लाह ताला हम बाकी भी नेटवर्क को खत्म कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा। नाज़रीन, शर्मिला फारूकी जो अवां ॻाल्हियूं ॿुधियूं उन्हनि जो इहो ई चवणु आहे त हिनमहिल ताईं जी जेका पुलिस जी कारकर्दगी आहे सिंध पुलिस जी, उनखे साराहणु घुरिजे ऐं उनजे पोयां जेको इनिशिएटिव वरितो आहे मंशियात जे विकिरे ऐं वाइपे जे ख़ात्मे लाइ, उहो फरियाल टालपुर साहिबा पहिरियां बि इजलास कयो ऐं इन में को शक न आहे त जॾहिं अहिड़े क़िस्म जूं जेके कार्रवायूं आहिनि, का अनमोल उर्फ पिंकी जहिड़ा मंशियात फरोश हाई प्रोफाइल जेके मंशियात विकिरो कंदड़ आहिनि उहे गिरफ़्तार थियनि था, ऐं अहिड़ा केतिरा ॿिया असांजे माशरे में बि ॿिया बि अहिड़ा नासूर मौजूदु आहिनि जेके नौजवान नसलनि खे तबाह करे रहिया आहिनि ऐं नौजवान असांजो तेज़ीअ सां इन ज़हर तरफ़ वधी रहियो आहे। त असां इहा उमेदु था कयूं त कमेटी ठहे या का फोर्स ठहे, एट दी एंड इन जेको मंशियात जी लानत आहे, मंशियात जो खुदो कारोबार आहे, इन खे ॿुझो अचे त जीअं असांजो नौजवान नसल इन जेको आहे मंशियात खां बची सघे। अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।